Welcome back to Game On Hay. Now, so far today, we've been using the studio as a discussion forum for the merits or otherwise of World T20 competitions and world cricket in general. We've actually had, I think, a very, very good discussion, very open discussion so far. We left you, as ever, as we like to do on this show, on a bit of a cliffhanger at the end of the last segment because Sir Viv, the great man that is Sir Vivian Richards, had a point he wanted to make, and yet we cut you off in your prime. So the stage, sir, is now yours. Thank you so much, David. David. Mr. Gower. Okay. Oh, no. I'll leave that for another time. Anyway, no, sorry, seriously. You had a point you wanted to make? Yeah. What I'm trying to say is, to express is the fact that we are making, all the ICC and the folks, you know, who are the governing body of the game in itself, is trying to make this thing too easy for guys who to come and just play T20 cricket. There's a foundation of the game in itself, which would have helped to have given us the ODIs, also given us the T20, which is a fantastic format. We can never forget that. Yeah. The things why I believe maybe we're losing so many players to the game in itself and countries is the fact that we make it too easy for guys to do that. If we govern a little bit better, and I think that there should be a two-tier system in a sense where in order for you to get the big bucks, the T20 bucks and all that stuff with the franchises around the world, you got to start with the game on a whole, which would have given you an opportunity for us to have all these various formats. It is not happening, and this is why we're seeing such mass exodus of individuals not wanting to play for their countries, but wanting to jump the hurdle and get to the next point. And I just believe that the governing body can do a little bit more, in my opinion, in order for you to. Some of the guys who just start T20 cricket, they will come and be in at some point. They can hardly play a forward defense because they do not know the rules and the real rigors of Test match cricket. And when you know that, to me, you become an all-rounder for you to do the necessary things. You can earn all the bucks in the world, but you got to start somewhere. Okay, but we all start somewhere, and we start at school, at club, depending on the country you are brought up in. You have a first-class system of sorts, you have to work your way through. And then when you get to that stage, I mean, I'm not quite sure what ICC can do to say, you know, to a young Viv Richards, say you're 19 years old, playing in Antigua, coming into the West Indies side, maybe to play Test cricket, maybe you are a Karan Pollard who, you know, is a specialist in short-form games. And at that stage, are you going to deny Karan Pollard the chance to earn a living? Because he hasn't passed the exam which says, here's my forward defensive. No, let's not talk about we're talking about the things that you should go through because of if you have a proper system in place, we won't have these particular individuals jumping the hurdle and trying to get to the next point. To me, that's too quick in my opinion. You have to have an understanding of the game, and when you do that, it creates a much better avenue for players wanting to represent their countries. And when you do that, then you have other opportunities in order for you to... Okay, I'm going to ask you a quick question because we need to move on and discuss today's game. Quick question, which is this. In order to have those opportunities, and okay, I'm going to use the West Indies as an example, where universe boss, Chris Gayle, has played over the years, he's played Test matches, he's made 300s, he's made triple hundreds in Test cricket. He's opted to play franchise cricket a lot because that's his way of making a living. And one of the reasons he's done that is because the West Indies does not have the money to pay him to play Test cricket. Is that true or is that false? I think that could be correct. So, what are you asking? You're asking ICC to give the West Indies enough money to incentivise Chris Gayle to play more often for his country, or is it down to West Indies? When I say when I use the term, there's a two-tier system. I think monies that are given by the ICC to develop the various countries should be quite equal on an equal basis. Because if we're looking to improve the game, we need to have a balance. Okay, right, so let's leave it there for now. This is a deep and convoluted issue, which would take more serious minds than mine, maybe, to unearth all the hidden meanings in this game. But right, let's start from the fact we love the game. Let's start from the fact now that we have a couple of games today in this World T20 as it stands, in the format that it's in, and we want the excitement to continue. And we're going to look at the game between India and Afghanistan, which of course is a serious game because India, first of all, need to get some points. Afghanistan are a potential threat.
And India have underperformed. I mean, there is one thing there is no doubt about is that India have seriously underperformed in this tournament. They need to get an act together today. Of course, I mean, they have not come in with the intensity, whether it was their batting, their fielding or their bowling. They have not looked good in any three departments till now in these two matches. And the biggest contrast now in this game would be Virat Kohli saying that the team did not show any courage, and then they are facing the Afghanistan team, who is nothing but courage. Indeed, indeed. So yeah. Well, yeah. Well, I'll leave you to discuss for the left wing the merits, the people who are important. Virat Kohli as the leader, as one of their batsmen who has at least made some runs, and see what there is in the offing for today. राशिद भाई, अभी तक विराट कोहली की एक इनिंग्स हुई है 50 रन की, वो भी उनको थोड़ा सा स्ट्राइक रेट उस तरह से नहीं हुआ जैसे T20 का वो रखना चाहते. क्या समझते हैं जो बैटिंग ऑर्डर इन्होंने लास्ट टाइम बदला, वो उसको वापस अब लाएंगे, दोबारा से चेंज करेंगे? देखें, इनकी वैसे जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ तो फेवरेट्स में थी पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनको हमने फेवरेट कहा था. लेकिन जिस तरह से मैचेस हारे हैं, तो लास्ट मैच जो अगेंस्ट न्यूजीलैंड हारे हैं ये लोग, उसमें क्या है कि अपने मेन जो प्लेयर है वो है रोहित शर्मा, उसको आप नंबर 3 पे लेके आ गए, वहीं पे आप मैच, और ये विराट कोहली नंबर 4 पे आ गए. तो इस टीम का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैनिक बटन उन्होंने वैसे ही दबा दिया था. मैच से पहले ही हार चुके थे ये लोग. टीम सिलेक्शन, ईशान किशन ओपन चले गए और ऋषभ पंत नंबर 5 पे आए. ये विराट कोहली ने बहुत ही, कोई डाउट ही नहीं है उनकी बैटिंग का, लेकिन एज ए कैप्टन मैं बहुत हाईली रेट नहीं करूंगा. अगर इंडियन टीम को ऊपर लेके आया तो उसमें धोनी का बहुत बड़ा कैरेक्टर था. और उसके बाद अगर देखें रोहित शर्मा ज़्यादा बेटर कैप्टन है. दोनों ने IPL CSK चेन्नई सुपर किंग जीती है, मुंबई इंडियंस ज़्यादा जीती है. तो दोनों की कैप्टनसी, लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा है. विराट कोहली ग्रेट प्लेयर है, लाइक सचिन तेंदुलकर, ग्रेट लीडर नहीं है ये, जिसकी वजह से इंडिया को प्रॉब्लम हो रही है. जो रवि शास्त्री को ले गया था वो क्वालिफाइड कोच नहीं है, वो कुंबले के ऊपर लेके आए क्योंकि रीजनल पॉलिटिक्स की वजह से वो आए. विराट कोहली का ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट, आप जैसे लाइक पोलार्ड का या गेल का या दूसरों का वैसा नहीं है, जैसे रोहित शर्मा का. लेकिन ये ग्रेट प्लेयर है, इसका कोई डाउट ही नहीं तीनों फॉर्मेट में. लेकिन एज ए लीडरशिप क्वालिटी, एज ए कैप्टन, मैं नहीं समझता कि ये बहुत ही उसमें कैटेगरीज में आएगा जो रोहित शर्मा या धोनी है. ये जो इन्होंने मिस्टेक की थी निकालने की कुंबले को वर्ल्ड कप से पहले, 19 के वर्ल्ड कप से पहले, एज ए कोच वो प्रॉपर कोच था, क्वालिफाइड कोच था. लेकिन रवि शास्त्री वो ब्रॉडकास्टिंग में लाइफ अपनी गुजार दी, उसके बाद कैसे कोचिंग में वो आ गया. तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए BCCI को. इसी वजह से इंडिया को प्रॉब्लम हुई है कि माइंडसेट इनका चेंज हुआ. और बड़े इवेंट थे, 2019 का वर्ल्ड कप इंडियन बेस्ट साइड थी, और ये वाला वर्ल्ड कप जिसमें नज़र आ रहा है कि बाहर होते हुए नज़र आ रहे हैं ये लोग. बिल्कुल. और अजहर भाई, ये डिस्कशन वर्ल्ड कप से पहले भी चल रही थी कोहली और रोहित शर्मा को लेके, उनकी लीडरशिप के ऊपर, और वही शायद एक प्रेशर फैक्टर भी बना के विराट कोहली ने ये कहा कि अब इस वर्ल्ड कप के बाद मैं नहीं कप्तानी करूंगा. तो जब इस तरह की एक फ्रिक्शन टीम में क्रिएट हो जाती है या कंपैरिजन क्रिएट हो जाए, फ्रिक्शन तो नहीं है, हम नहीं कह सकते यहाँ से बैठ के, पर इस तरह की जब कंपैरिजन शुरू हो जाता है टीम के अंदर, तो माहौल ऑब्वियसली थोड़ा सा अफेक्ट होता है. और आपको लगता है कि उसका कोई कंट्रीब्यूशन होगा जिस तरीके की क्रिकेट अभी खेली जा रही है? आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई बात है. उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले ही कह दिया था कि मैं कप्तानी छोड़ रहा हूँ. जहाँ राशिद भाई ने बात की, यस, रोहित शर्मा का सक्सेस रेट ज़्यादा है इन IPL क्रिकेट. और कोहली को अगर आप देखें तो कोहली की कप्तानी में ये ऑस्ट्रेलिया में जीते, ठीक है, कोहली की कप्तानी में इंग्लैंड में जीते. तो इनकी टीम ने बाहर भी जाके जीतना शुरू कर दिया. पहले जितनी क्रिकेट होती थी, अजिंक्य रहाणे T20 रहाणे कप्तान था एक मैच में जब वो जीते. नहीं, मैं T20 की बात कर रहा हूँ. टेस्ट मैच में तो जीते हैं वो. मतलब उनकी अगर ओवरऑल आप देखें ना तो कप्तानी उन्होंने की है, मतलब उनकी टीम जीती है. पहले आपको नहीं लगता था. T20 फॉर्मेट ऐसा है, हम पहले भी बात करते हैं, इसमें लक का भी काफ़ी दारोमदार होता है. और फिर आप एक आधा मैच अगर आप एक बैट्समैन खड़ा हो जाए तो आपको चेंज कर देता है. लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें कि वनडे क्रिकेट देखें या T20 क्रिकेट देखें या टेस्ट मैच क्रिकेट देखें, तो उनकी टीम की उनके अंडर विराट कोहली काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं. डेफिनेटली जो बैकबोन था यहाँ पे उसको डेफिनेटली फर्क पड़ा है कि जिस वक्त से धोनी गए हैं, कप्तान तो वो था लेकिन धोनी की काफ़ी सपोर्ट थी. अब वो
जो है ना वो स्पोर्ट नज़र नहीं आ रही थी, तो वो एक्सपोज हो गए, मैं ये कहूँगा कि एक्सपोज हो गए। और जहाँ पे बात होती है धोनी की, उन्होंने CSK में भी जीता और सारा कुछ देखा, और जिस तरह हमने देखा कि वर्ल्ड क्रिकेट में भी उनकी, तो डेफिनेटली वो फ़र्क तो है। लेकिन अगर हम इंडिया की वैसे बात करें टीम के हिसाब से, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज इस टूर्नामेंट में ना, आई डोंट नो कि क्या वजह थी कि आप देखते हैं, वरना नॉर्मली इंडियन प्लेयर्स आते हैं उनमें एक एरोगेंट, इनमें एक होता है कि वी आर बॉस अराउंड हेयर। इस टूर्नामेंट में मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आई, दे डरे डरे थे, वेदर के वो कप्तान जा रहे हैं तो कुछ उसका मसला था या अंदर कोई उनकी ऐसी सिचुएशन हुई है, आई डोंट नो, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं थी। अगर आज भी उनकी बॉडी लैंग्वेज अगर ऐसी ही होगी, तो जैसे आपने बात की करेज की, तो अफगानिस्तान में करेज भी देखी, फाइट भी देखी, डिज़ायर भी देखा, तो वो टीम जो है ना उनको हरा सकती है। और इस वक्त जो अगर आप उनकी बॉलिंग लाइन आप देखें, हमीद के अंदर आने से उनका जो बॉलिंग लाइन जो स्ट्रेंथ है ना वो बढ़ गई है। बिल्कुल। उमर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इससे पहले मैं इंग्लिश पैनल की तरफ डिस्कशन को लेके जाऊँ? नहीं, सब कवर हो गया। बस ये कि आज के मैच में जिस तरह वो मैच है, अफगानिस्तान के पास भी एक चांस है, क्योंकि अगर ऑन द बोर्ड उनके पॉइंट्स भी देख ले और उनका जो नेट रन रेट है तो बहुत ही अच्छा है। उनके लिए ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, बल्कि इवन द लास्ट गेम जो न्यूजीलैंड के साथ भी है, तो उनकी कोशिश होगी कि मैच जीते, क्योंकि ऑलरेडी उनका रन रेट तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और जिस तरह अजहर भाई ने बात की कि हामिद के खिलाने से वो और ज़्यादा स्टेबल हो गए, आज में भी एक आध वो चेंज कर सके, क्योंकि जिस तरह असगर था उनके मिडल ऑर्डर में वो रिटायर हो गया, तो उनके बेंच पे है ऐसे बैट्समैन के एक आध लड़का जो शाहिद है वो अच्छा खेल रहा है, और मैं भी एक आध चेंज कर रही जन्नत की जगह ये अगर मुजीब फिट होता है तो वापस आ जाएगा। तो आप अगर देखें तो स्पिन और फास्ट अटैक दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं जी। So yeah, they've discussed Virat Kohli's batting, which no one can say anything about. Of course, he's a top batter, but it's about the leadership and how MS Dhoni and Rohit Sharma has been, they think, more shrewd leaders, and especially in this format of the game. Right, let's take that across. Basically, there have been something like 2 individual batting performances for India in 2 games. Kohli has provided one of those, the only 50 they've made so far. Interesting discussion about his captaincy, because from what you see from outside, he's a passionate man, he leads with vigour, with verve, but that doesn't always necessarily make you the best man to lead a team, and that's an open discussion point which maybe you can lead on. Well, first of all, let me put my hand up. I'm a Virat Kohli fan. Okay, well that's absolutely fine. Let me say that. The Indian team have not performed to the best of their ability. I'm not quite sure why, but they're up against Afghanistan today. I believe that this is a team that is good enough, and with all the criticism that they've been getting at home and around the world of such, if they have any pride in their performances, I believe they're going to come to the party today and just basically nullify all that nonsense that we've spoken about them. It's a good enough team. Doesn't look so at present, but I do believe that there's enough substance in that team in order for it to win today and even go on a little bit. Well, I mean, the great thing for India, if we can say that, is they play Afghanistan, Scotland and Namibia. So they've had their 2 toughest games, they've come second. Today could still be interesting, but they are still the higher ranked team. And if you look down the 11s, they still have theoretically the better players. But this thing called pressure, this thing called expectation, this can make a big difference sometimes. It's all about India, Pakistan. It could go either way. If Pakistan lost against India, it should be the same story. Yep. But this is unfair. I mean, they just lose only 2 games, and it's end of the world for them. This format has to improve. It has to be more opportunity for the teams to perform and underperform. It's not that you lost 2 games and you're out of the tournament. And Kohli, you know what? Kohli exposes himself and his team 2-3 days back when he admitted we played scared. And as captain, you hold it. What message you giving across is, look, we are there. Now whatever he will say on the toss is not meaningful. The message already sent across that they are scared and they're wounded. One win, one loss against Pakistan,
and they're done. I think this is what the leadership is. You lose 2 games, it doesn't mean that this is end of your journey. Keeping the bad things, whatever the weaker things inside you, and putting across a strong message that we're still there, we're still strong enough. I think that's where Kohli goes But wrong. then I think the reward, okay, once you accept the format as it stands, I think the reward for the best teams, which now includes Pakistan unbeaten, England unbeaten, so they are the 2 top teams so far in this tournament. And the reward for getting things right straight away is that they make their runs, they take their wickets, they hold their catches, they win games, they get their points. The danger of saying, okay, India lost a couple, let's give them more games to get their feet, is that the tournament extends for months. And we already know that the IPL needs 6 months to play, and world cricket has the other 6 months. So we can't have tournaments extending too far. And it's part of the jeopardy, part of the tension, is saying to even the best teams, right, you have to get it right in this tournament, and there'll be another one in 2 years' time. So if you haven't got it right this time, you play again. Let's talk about India's what they really need to do today, which is to get the best. And this is part of captaincy, but it's also part of individuals taking responsibility to get the best out of what is a talented team. I mean, for instance, if you look at the top of the order, the best sides in this competition so far have got runs at the top. India have failed to do so. Rohit Sharma is a very, very talented player, and yet his figures in the tournament so far are down. I mean, we can ask the question why. You can either look at charts and graphs and balls and beehives and strike rates and all sorts, or you can say, well, he got a good delivery from Shaheen Shah Afridi, and he got another one from Ish Sodhi, and that's it. What do you reckon? It's all past. Whatever this graph is, it's past. But what does he need to do? What does he need to do? He needs to believe in himself. The whole Indian team need to believe themselves. 2 games, bad games, won't make you from number 1 to nothing. I think they gone wrong of taking so badly the loss against Pakistan. I mean, look, it's going to happen. It's always India, Pakistan, the fans and the people. I mean, look, you have to take it and don't take it into your head. It's about believing good about yourself and coming out and doing something better than whatever you have done in your past. Bring your best now, because you have shown people and you have undermined your game and your country reputation. Now this is the time to come up and show the world that who you are, making the mark. और ये बातें तो चल रही हैं राशिद भाई, जो ग्राफिक रोहित शर्मा का अगर आप उसको भी थोड़ा सा बताएं कि आप क्या समझते हैं कि क्या इसमें उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ नजर आ रही है? वीकनेस आगे से जो बॉल अंदर आती है वो लेफ्ट आर्म फास्ट हो या राइट आर्म की, तो ये थोड़ा खेलते हैं, लेकिन सेटल होने के बाद ये मेरे ख्याल से सिर्फ इंडिया का नहीं है, वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन में से ये रोहित शर्मा आते हैं। इनका रिकॉर्ड ओडीआई में देखें, अब नाउ टेस्ट क्रिकेट में भी देखें, तो इसका तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। लेकिन कुछ प्लेयर्स के ये जो दिखाते हैं, हम डाटा दिखाते हैं, वहीं से बड़ी टीम जो है लाइक इंग्लिश टीम है, क्यों इतने ऊपर चली गई, वो यूज़ कर रहे हैं। अदर को पता होगा कब से यूज़ कर रहे हैं अपने प्लेयर्स के साथ, इंडियन भी यूज़ कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियंस यूज़ कर रहे हैं। हम अब इसमें आए हैं कि हम इसको यूज़ करें। हमारे फ्रेंचाइज के पास कुछ लोग हैं, लेकिन ये डाटा बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। जो कोहली है, कोहली ब्रेन वाला क्रिकेटर है, वो बिलीव नहीं करता इन चीज़ों को, लेकिन शायद इस इवेंट के बाद ये लोग भी बिलीव करने लगेंगे कि वाकई में इसकी बहुत ज़रूरत है। आपको बॉलर्स का पता होता है कि हसन अली कहाँ बॉल करेगा ज़्यादा, जिस तरह अजहर ने कहा, तो आपको पहले से पता है कि कहाँ पे ये बॉलिंग करेंगे। जिस तरह सिलेक्शन में देखें, ये जैसे रवि शास्त्री ने किया या विराट ने किया सिलेक्शन, अश्विन का किया, 4 साल पहले वो खेला हुआ है T20 इंटरनेशनल, वो आ गया। आपने वाशिंगटन सुंदर को ड्रॉप कर दिया, जो आपका मेन बॉलर लास्ट 2 ईयर से चल रहा था। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए विराट को इस पे मानना पड़ेगा कि डाटा जो चल रहा है वर्ल्ड वाइड, उसको बिलीव करना पड़ेगा इनको। एक ग्राफिक हम और भी इसमें ऐड करते हैं, केएल राहुल का। अजहर भाई आप उसके ऊपर भी बात कर लें साथ। लेकिन डाटा की बात करें ना, अगर आप इसका ये देखें उसका रोहित शर्मा का, तो आपको उसको लगेगा कि जो अंदर आता हुआ बॉल आगे अर्ली ऑन वो फंसता है। और अगर आप दूसरे मैच की बात करें तो डेटा जो है ना,
सबको पता है कि ही इज़ अ गुड पुलर। अगर जब भी कोहली रोहित शर्मा को ये बॉल हुआ है, यहाँ पे उसको अर्ली ऑन बाउंसर हुआ है, वो बहुत दफ़ा आउट हुआ है, आईपीएल में भी आउट हुआ, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आउट हुआ, तो वो जाता है। तो फाइन लेग उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली लोग स्क्वायर लेग रखते हैं कि फर्स्ट ओवर्स में, लेकिन इसके लिए फाइन लेग रखते हैं कि अगर क्योंकि ये खेलता है वहाँ जाता है। तो डेटा जो है ना वो आपको बता सकता है, लेकिन एंड ऑफ द डे कि बॉलर ने अपना जो है ना प्लान को एग्जीक्यूट करना है कि क्या है। देयर इज अ फाइन लाइन। अगर बॉल यहाँ पे है तो वो उसका जाएगा, अगर बॉल यहाँ पे है तो वो छक्का ही मारेगा आपको। तो क्वालिटी प्लेयर है। वही बात जो मैंने पहले की थी कि जो अगर आप इनकी बैटिंग देखें वो क्वालिटी बैटिंग लाइन अप है, उसमें नो क्वेश्चन अबाउट दैट। लेकिन वही है कि अपनी एबिलिटी को बैक करना, अपने स्किल को बैक करना। और अभी हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जो है ना ऐसी पोजीशन में खड़ा हुआ है, 4 मैच जीत के, इंग्लैंड 4 मैच जीत के वहाँ पे बैठा हुआ है। दैट डज नॉट मीन कि दे गोना विन द वर्ल्ड कप। ये ज़रूरी नहीं है कि ये वर्ल्ड कप जीतेंगे। इट्स अ राइट टाइम पे जब भी आप T20 की हिस्ट्री देख लें या टूर्नामेंट की हिस्ट्री देख लें, इट्स द मोमेंटम कि कौन सी टीम राइट टाइम पे मोमेंटम अपना लेती है और फिर वो क्वालिफाई करती है। अभी जिस वक्त हम एक मैच के बाद जब हम सेमीफाइनल में जाएंगे तो ऑन द डे वो डे काउंट करेगा कि आप उस दिन कैसी क्रिकेट खेलते हैं। अगर आपने उस दिन कम मिस्टेक की तो आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, अगर आपने ज़्यादा मिस्टेक की तो फिर वो सारा रह जाएगा कि आप 5 मैच जीत के गए हैं या 6 मैच जीत के पहुंचे हैं वहाँ पे, ऑन द डे आपकी परफॉर्मेंस काउंट होगी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी डिस्कशन चल रही है। इंडिया की टीम को हम इन डेप्थ एनालाइज कर रहे हैं, अफगानिस्तान की टीम पे भी बात करेंगे, स्कॉटलैंड न्यूजीलैंड पे भी बात करेंगे, पर मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।